What's up everybody? So this is doodlersri and welcome to my channel. तो आज की हमारी वीडियो है how to become thin or fit. No, I'm not giving you any diet suggestion or any kind of exercise suggestions, but today we will make something video tutorial on Photoshop where I will show you how to make your photo look thinner. Okay, so from fat to fit. Okay, so इससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो लोग भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो उन लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. इससे मुझे इंकरेजमेंट भी मिलेगा सो आई कैन डू बेटर वीडियोस इन फ्यूचर ऑल्सो. ओके, एंड अनदर थिंग इज़ लाइक if anyone want a collaboration or any kind of design work from me, so you can also email me personally. Like I have given my email address in the bio, so provided the email link in the below description. Okay, so without any further ado, let's see how we can make this. तो आज हम कुछ ऐसे करने वाले हैं लाइक जो मैंने पहले बताया, लाइक इन वन स्टेप हाउ टू बी थिन टू फैट टू थिन. ओके, तो मुझे ये मेरा फ़ोटो है, ये देखिए ये मेरा फ़ोटो है. सो इसका जो रिज़ल्ट मुझे चाहिए, सो आई गॉट दिस रिज़ल्ट. ओके, सो फ्रॉम दिस टू दिस. ओके, सो एक बार मैं दिखा रही हूँ ये वाला. ओके, तो इसको थोड़ा आपको ध्यान से देखना है कि कैसे ये करते हैं. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द प्रोसेस एंड देन आई विल फास्ट फॉरवर्ड इट लाइक बिकॉज इट विल टेक मच टाइम. तो थोड़ा यू नो लाइक धीरे से और थोड़ा लाइक पेशेंस से आपको करना है, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा. क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ जगह पर मुझे थोड़ा काम और भी करना है. थोड़ा यहाँ पे कुछ रेलिंग्स में थोड़ा लाइक इधर उधर है, तो इसको भी फिक्स करना है. ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल I got this image from Pixel, so you will get the link from the description. So I got this image from Pixel, and now what I will do is will go to filter liquify. Okay, तो अभी जो आप देख रहे हैं कि इमेज एक दूसरे विंडो पर इमेज ओपन हो गया है. तो अभी यहाँ पे कुछ टूल्स आपको दिखाई देगा. सो इसका जो फर्स्ट टूल है फॉरवर्ड वर्क टूल, इससे आपको काम करना है. तो आई एम क्लिकिंग ऑन दिस. ओके, एंड आई एम जस्ट zooming the part where I will work. So first of all I will work with on this hand. Okay, so I'm zooming it. ओके, तो ये जूम हो गया. अभी इसमें क्या करना है, ये आपको थोड़ा एडजस्ट करना है. और इसको एडजस्ट करने के लिए आई मीन if you need to make the size bigger or smaller, you have to press the bracket keys. Okay, so I'm pressing the bracket keys. So yeah, it's a little bit big. Now what I'm doing is I'm clicking the left mouse button and just dragging this to change the size of it. Okay, so for this like I'm fast forwarding this video so that it takes less time. Okay,
ओके, सो ये रहा हमारा रिज़ल्ट. सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट हो गया है. तो इससे ज़्यादा स्लिम करने से यू नो लाइक दूसरी चीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है. सो आई विल कीप इट लाइक दिस. ओके, सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दैट. व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन वर्क लिटिल बिट मोर ऑन फेस ऑल्सो इफ़ यू वांट. ओके, एंड जस्ट सेविंग दिस एज thin. Let me just make it thin. Liquify. Okay, so just saving it. Liquefied woman. Okay, so yeah, liquefied woman. And I'm just importing the you know like the previous one. So the original picture. Yeah, so this is our original picture, and I'm just placing the liquefied effect on the top. Yeah, so here you go. So here is our result, and here is the original picture. Okay, so you can see the difference. It's pretty different. Like it has almost become pretty slim. Okay, so you can work a little bit on this area, because as you can see, like little bit इसके इधर उधर में थोड़ा लाइक यू नो एसिमेट्रिकल है. तो इसको आप थोड़ा मतलब वो लिक्विफाई इफेक्ट से ही आप कर सकते हो. थोड़ा आपको टाइम लगेगा और थोड़ा पेशेंस के साथ करना है, तो ये और भी लाइक परफेक्ट होगा. ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग. सो दैट्स इट फॉर टुडे. सो ये था आज की वीडियो दोस्तों. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन पर अपना कमेंट, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा. और इफ़ यू हैव सजेशन फॉर एनी पर्टिकुलर वीडियो और एनी पर्टिकुलर ट्यूटोरियल, प्लीज़ लेट मी नो अबाउट दैट ऑल्सो. आई विल ट्राई टू मेक दोज वीडियोज़ फॉर यू. ओके, सो अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्ती में रहिएगा, आर्ट बनाते रहिएगा. सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन